W. Bateson was the scientist who gave the term genetics. काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे इसको मेंडल से एसोसिएट करते हैं, but Mendel was the father of genetics, not introduced the term genetics. Who introduced the term genetics? W. Bateson was the scientist who introduced the term genetics. Clear to all? Okay, next is from parents to offspring, the transmission of characters, that is known as inheritance. That is known as inheritance, and the variation of is degree of change of characters from parents to offspring, and this all are studied under the genetics. Clear to all? Okay. Now this picture belongs to the W. Bateson. Now what is genetics? Genetics includes two basic characters, that is heredity and hereditary variations, which combinedly forms genetics. It has two parts. What is heredity? Question अभी आया, what is heredity? Heredity क्या है प्यारे बच्चों? The transmission of characters from parents to offspring. कैरेक्टर्स कहाँ पास ऑन कर रहे हैं? पेरेंट्स से और कहाँ तक? प्रोजेनी तक. वो जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन है उसके प्रोसेस की स्टडी को हम क्या बोलेंगे बच्चे? हेरिडिटी. ठीक है, क्लियर है इतनी बात? एंड द चेंजेस ऑब्जर्व्ड फ्रॉम पेरेंट कैरेक्टर्स टू द प्रोजेनी कैरेक्टर्स, these changes are studied under the variations. So what will be the definition of variation? Variation may be defined as degree of change of characters. What do you mean by variation? Degree of change of characters from parents to progeny. Parents to progeny. I think this is clear to all. Both heredity and variation. Heredity includes the transmission of characters, while hereditary variations include the degree of change of characters. Clear to all? Now genetics is divided into a flow chart which includes variation. Okay, we have discussed about variation. Pattern of inheritance, we have discussed about inheritance or heredity, that is responsible for same. Inheritance is also the transmission of characters, and heredity is also the transmission of characters. As well as genetics include gene distribution. Now the functional segment of DNA. In nucleus there is a genetic material, that is DNA, and the functional segment of DNA is known as gene, and the distribution of gene is also studied under the genetics. And how does it affect the changes in the population? That is also studied under the genetics. So genetics includes inheritance, variation, how does changes in the population occurs, and gene distribution. Hope so this is clear to all. So the next is why we study about genetics. हमें genetics पढ़नी क्यों है? You are observing some pictures like these. Can you observe that there is a similarity in complexion of these both parents and as well as the progeny, right? The complexion of that two brothers, height of the two brothers, complexion of face structure of both the parent and the progeny, you can observe there are similarities, right? Clear to all? How, which things do you observe in this? In this you observe that transmission of characters is from parent to progeny. आपने ये चीज देखी यहाँ पे, एक पेरेंट्स के कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं बच्चे? अपने आप को रिपीट कर रहे हैं किसके अंदर बच्चे? प्रोजेनी के अंदर, राइट? तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हेरिडिटी के बारे में. व्हाट डज हेरिडिटी सिग्निफाई? It means the transmission of characters from parents to offspring. Hope so heredity is clear to all. Okay, so the next is heredity. Heredity is basically characters passed from one generation to the another, and hereditary characters are those characters which convey the information. जो hereditary characters होते हैं वो क्या करते हैं? वो information को convey करते हैं.
The study of transmission of characters from one generation to the next generation, or you can say simply parents to progeny. This process is known as heredity. Clear to all? Now, next topic is variation. In this same picture, can you observe the differences? Yes, there are minor differences. They are not exactly same. ये exactly same नहीं है. There are varying degree of characters, and this process is known as variation. What is variation? The differences between the characters of parents एज वेल एज ऑफस्प्रिंग्स. पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कितने डिफरेंसेस हैं किसके बीच में बच्चे? कैरेक्टर्स के बीच में. वो किसके अंदर पड़ेंगे? वेरिएशन के अंदर. क्लियर है इतनी बात? आई थिंक ये समझ आया होगा आपको. नाउ द variations are the differences in characteristics by the individuals of species, also the progeny of same parents. आपने पेरेंट्स पढ़ा और पेरेंट्स से आप किसके अंदर? प्रोजेनी के अंदर, राइट और उसके अंदर जो भी डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं? वेरिएशंस के अंदर. क्लियर है इतनी बात? नाउ व्हाट इज द कोज ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन का कोज क्या है बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्यों है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि इसके अंदर कितने पेरेंट हैं? दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है. दो पेरेंट होंगे तो दोनों के क्या होंगे बच्चे? डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आएंगे और दोनों से मिलकर के क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है. और जाइगोट के अंदर 50% कैरेक्टर्स एक पेरेंट से आ रहे हैं और 50% दूसरे पेरेंट से आ रहे हैं और दोनों से मिलकर के एक हाइब्रिड बन रहा है. दैट मीन्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स. ना तो वो फर्स्ट की कॉपी है ना वो सेकंड की कॉपी है. वो उन दोनों से मिले हुए कैरेक्टर से बना हुआ है. और वो क्या इंक्लूड कर रहा है प्यारे बच्चों? वेरिएशंस को इंक्लूड कर रहा है. क्लियर टू ऑल? नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेनेटिक्स? Why genetics is required? To selective breed, right? You have to select the superior breed. You can go through the genetics to select the organism which possess desirable characters. In hybrid technologies, in biotechnology, you can include the genetics. हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? जेनेटिक्स के बारे में. ह्यूमन ने बेसिकली क्या किया बच्चे? वाइल्ड पॉपुलेशन से, दैट मीन्स जो फॉरेस्ट की पॉपुलेशन है किसकी बच्चे? प्लांट्स की और एनिमल्स की. वहां से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को एक्सप्लॉइट किया है, इंटरप्रेट किया है, फॉर्म किया है. किसके साथ ट्रीट करके बच्चे? उसको नॉर्मल के साथ ट्रीट करके वहां से डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स को सेलेक्ट किया है. किसके बेसिस पे प्यार बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ genetics. These are the advantages of genetics in human life. Clear to all? So the next part is example for this is Sahiwal cow. This is totally based on NCERT and you can observe these lines in NCERT of class 12th. Sahiwal cow is basically obtained from wild cows during artificial selection. In case of artificial selection techniques, desirable characters are selected in a particular species and used for domestication. Clear to all? So now the question arises, genetics is the study of heredity as well as a variation. किसके बारे में बच्चे? हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों के सम को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के अंदर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर कौन है बच्चे जेनेटिक्स के? तो वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल. क्लियर टू ऑल?